Hello everyone, let's discuss the left questions in this video. The very first starting with the graph which we left in the previous video, and that is the Maclaurin mentioned plot of a single substrate catalyzed enzyme reactions. The x-axis we have substrate concentration, and the y-axis we have V max upon 2. Here we have V max, here we have V max, and the graph will be turned like here and it will be turned like this. So here we have V max, and this is the imaginary drawn line. Here representations of Km. So this is the graph. Now moving to the next question, that is how a value for Km can be obtained from V naught versus S graph, where V naught is equal to half V max. So let's discuss this question also. When V naught is equal to V max upon 2, then V max upon 2 will be equal to V max S Km plus S. Now by cancelling the V max, what we will get? We will get half equal to S by Km plus S, and therefore we will have, by cross multiplying, Km plus S equal to 2S. But we will cross multiply it, this S will shift to here, and we'll get Km plus S equal to 2S. Hence we have Km equal to S at V naught equal to V max by 2. So answer is derived. Now moving to the fifth questions. Describe the allosteric regulations of the enzyme activity. So allosteric control is one of the important mechanisms of enzyme regulation. So what is allosteric control? It is one of the most important mechanism of enzyme regulation. Enzyme को regulate करने के लिए, enzyme regulation के लिए सबसे important mechanism है allosteric control. In an allosteric enzyme, activity of the enzyme is controlled by binding the molecule to the site of the other than the active site. ऐसा कब होता है कि कोई भी activity enzyme का हो रहा है, and allosteric enzyme क्या है कि activity of the enzyme is controlled by binding the molecule at the site other than the active site. enzyme है उसका एक एक्टिव साइट होता है जहाँ पे बाइंडिंग होती है, पर क्या होता है कि अगर एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरे साइट पर बाइंडिंग हो एंड उसकी एक्टिविटी कंट्रोल्ड हो, तो दिस इज व्हाट डन बाय एलोस्टेरिक एंजाइम. ये क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, एक्टिव साइट के अलावा दूसरे साइट पर अटैच होकर के, एंड दिस अदर साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट. तो यही एलोस्टेरिक साइट है. मतलब कभी कभी क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी कंट्रोल की जाती है बाय बाइंडिंग ऑफ किसी मॉलिक्यूल के बाइंडिंग से एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट. तो वो अदर साइट, एक्टिव साइट से जो अदर साइट है, दैट इज एलोस्टेरिक साइट. द बाइंडिंग ऑफ एलोस्टेरिक modulator induces the conformational changes which result in the alterations in the catalytic activity of the enzyme. So अगर allosteric modulator bind करे तो ये conformational change induce करता है, इसके वजह से एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी अल्टर भी हो सकती है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशंस. पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशंस व्हाइल बाइंडिंग ऑफ अ मॉड्यूलेटर टू एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस. सो दो टाइप ऑफ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशंस होते हैं. पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशंस जब बाइंड करेगा मॉड्यूलेटर एंजाइम से और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड है नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर. तो पॉजिटिव का मतलब वो जब जैसे ही बाइंड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया, और नेगेटिव का मतलब वो कि जैसे ही बाइंड किया एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, जैसे ही बाइंड किया तो डिक्रीज द एक्टिविटी, वो फिर एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा. सो इस तरह से अगर डिक्रीज कर एक्टिविटी को तो इट इज नेगेटिव, और अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे देन इट इज पॉजिटिव मॉड्यूलेशंस. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट आर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, गिव सम एग्जांपल्स. प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या है एंड उसके एग्जाम्पल्स देने हैं. तो सर्टेन एंजाइम्स सेक्रेटेड एज अ प्रिकर्सर इन एन इनएक्टिवेटेड फॉर्म एंड नोन एज प्रो एंजाइम और जाइमोजेंस. तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेक्रेट करा जाता है एज अ प्रिकर्सर, और वो भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में.
तो उनको हम बोलते हैं प्रो एंजाइम या जाइमोजेंस। प्रो एंजाइम्स का काम होता है कि प्रोटीन को हेल्प करता है, इट हेल्प द प्रोटीन टू ट्रांसपोर्टेड और स्टोर्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म दैट कैन बी कन्वर्टेड इन अ एक्टिव फॉर्म एट अ पर्टिकुलर साइट। हर एंजाइम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहता है जब तक वो अपने साइट पे, अपने टारगेट साइट पे पहुंच ना जाए। व्हेन इट रीच इट्स टारगेट साइट देन इट गेट्स एक्टिवेटेड, बट जब तक ना पहुंचे वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहता है। तो वो जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स उस फॉर्म में रहें, उस इनएक्टिवेशन फॉर्म में रहें तब तक जब तक वो अपने टारगेट साइट पे, पर्टिकुलर साइट पे पहुंच ना जाएं। तो उसके लिए क्या होता है, प्रो एंजाइम उसको हेल्प करता है। प्रो एंजाइम प्रोटीन को हेल्प करता है ताकि वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में स्टोर रहे एंड सो दैट जब ज़रूरत पड़े पर्टिकुलर साइट पे पहुंचे तभी वो कन्वर्ट हो सके एक्टिव फॉर्म में। प्रिकर्सर ऑफ पेप्सिन इज पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ ट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज जाइमोजन ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सेवरल अदर एग्जांपल्स इंक्लूड ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम, प्रोकोलाजन एंड प्रोइंसुलिन। इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पेप्सिन के लिए पेप्सिनोजन हो गया, ट्रिप्सिन सिंथेसाइज एज अ ट्रिप्सिनोजन, फिर प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जाइमोजन ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सेवरल बहुत एग्जांपल्स और भी हैं। Zymogen underlie the mechanism whereby the level of enzyme can be readily increased at the post-translational level. At the post-translational level by proteolytic leavings and irreversible modifications. Generally, cellular and bacterial proteolytic enzymes are synthesized in an inactive precursor to prevent the undesired protein degradation. तो बोल रहे हैं कि सेलुलर बैक्टीरियल प्रोटेोलाइटिक एंजाइम जो होता है सिंथेसाइज होता है इनएक्टिव प्रिकर्सर्स के फॉर्म में, यानी जाइमोजेंस इनएक्टिव प्रिकर्सर जाइमोजेंस की तरह, ताकि वो प्रिवेंट कर सकता है उसके अनडिजायर्ड डिग्रेडेशन को। अब जाइमोजन का कन्वर्शन एक्टिव फॉर्म में होगा इधर एसेसरी मॉलिक्यूल्स के थ्रू और ऑटोकैटालिटिक प्रोसेस में इन द रिस्पॉन्स टू ड्रॉप इन पीएच। फिर आते हैं हम चार्ट की तरफ। कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रिकर्सर्स के बारे में जानेंगे, कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे, कुछ एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स ड्रॉ दैट चार्ट। फर्स्ट here we will write the enzyme, here we will write the precursor of it, and here we will write its function. The first is trypsin. Precursor is trypsinogen, and function is pancreatic secretions. Second one is chymotrypsin. Enzyme is chymotrypsinogen. Function is pancreatic secretions. Third enzyme is carboxypeptidase. एंजाइम क्या है, कुछ नहीं, उसके आगे प्रो लगा देना, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फंक्शन क्या है, पैनक्रेटिक सिक्रेशंस। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू मोर। enzyme, here precursor, and here will write its function. What is the enzyme? Elastase. What is the precursor? Proelastase. The function is again pancreatic secretions. Next enzyme is phospholipase A2. The proenzyme is prophospholipase A2. And what is the function? Pancreatic secretion. The last one is pepsin. What is the precursor? Precursor is pepsinogen, and its function is secreted in gastric juice, most active in pH range from 1 to 5. So that's all for this video. We will discuss the next chapter number 12 in the next video. Thank you everyone, and don't forget to subscribe my channel.